Derangements, as the name suggests, means the de-arrangement of objects. Okay, I will understand this with an example. The first question we'll take, there are 3 letters and 3 corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed in envelope such that no letter goes into its correct envelope? Okay. So now, in this case, I have 3 colored letters, red, blue, and yellow, and corresponding 3 envelopes also. Okay. Now, ये तरीके से assume करते हैं कि शायद ये सही तरीका है इनको arrange करने का, red के साथ red, blue के साथ blue, yellow के साथ yellow, right? This is the correct way of arranging them. Okay. Now you want to de-arrange them. Okay. Basically, you want to ensure that no letter goes into its corresponding correct envelope, right? तो हमें क्या करना पड़ेगा? Okay, we have to make them go into like improper letters, right? So पहले अभी हम क्या करेंगे? रेड वाला जो एनवलप है उसमें हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम एक ब्लू वाला लेटर डाल दें, राइट, या फिर हम रेड वाले एनवलप में एक येलो वाला लेटर डाल दें, राइट? सो वी हैव 2 पॉसिबल ऑप्शंस. नाउ गाइस, ब्लू वाले में ऑलरेडी हमने ब्लू वाला लेटर तो प्लेस कर दिया है रेड वाले में. ओके, इन द येलो कलर्ड एनवलप यू कांट प्लेस अ येलो कलर्ड लेटर, राइट, बिकॉज़ दैट विल बी अ करेक्ट अरेंजमेंट. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले केस में हमें येलो वाला लेटर प्लेस करना पड़ेगा ब्लू वाले एनवलप में, राइट? एंड बाय डिफॉल्ट द रेड वाला लेटर कम्स इनटू द येलो वाला एनवलप. अब सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा गाइस? ओके, ब्लू वाला अब यहां तो नहीं आ सकता बिकॉज़ दैट विल बी अ करेक्ट अरेंजमेंट, राइट? सो ब्लू वाला हम कहां प्लेस करेंगे? हम येलो के साथ प्लेस करेंगे. एंड बाय डिफॉल्ट द रेड कलर एनवलप, the red colored letter will fall into the blue colored envelope, right? So there are 2 ways of de-arranging or deranging them, right? Okay. अब इसी को guys हम समझते हैं थोड़ा mathematically, okay, by the concept of derangements. Okay, completely wrong arrangements, as I told you. Okay, there's a ready-made formula for this. Okay, for derangement of n objects, the number of ways of doing or deranging them is n factorial multiplied by 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial up to minus 1 raised to n divided by n factorial. Okay, you can use this formula anytime for finding out the derangements of n objects. Okay, and there are certain few derangements you can always remember, guys. See, if there is only one object, you can derange it, right? But if there are 2 objects, you can derange them in exactly one way, right? Exchange कर दो उनको. Okay, 3 objects का अभी हमने देखा है, there are 2 ways to derange them, right? Now 4 numbers onwards, what you can, or 4 terms onwards, what you can do is you can remember the standard. Okay, so d4 basically क्या हो जाएगा guys? D4 will be 4 into d3 plus 1. Okay, so derangements of 4 objects will be basically d3 into 4 plus 1. d3 हमने कितना फाइंड किया? 2 फाइंड किया थोड़ी देर पहले, right? So put the value of d3 as 2 into 4 plus 1 is 9. Similarly guys, d5 क्या हो जाएगा? d5 is d4 into 5 minus 1. So it will be 9 into 5 minus 1, 44. Okay, similarly d6 पर guys क्या हो जाएगा? d6 will be 6 into d5 plus 1. So it will be 6 into 44, 264 plus 1, 265. Likewise, you can remember a formula. dn plus 1 is dn into n plus 1 plus minus 1 to the power n. ओके, तो समझने की बात गाइस ये है, जैसे कि सपोज अगर आपको डी एन फाइंड करना है, डिरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहिए आपको, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप इज ये डेफिनेटली डी इनटू एन माइनस 1 तो हो ही जाएगा, राइट? सो हियर राइट इट एज डी एन माइनस 1 इनटू एन. ओके, अब अगर ये इवन है, इवन में ये बेसिकली हो जाएगा +1, और अगर ये ऑड हुआ तो ये हो जाएगा -1. ओके, तो ये आपको अलग से समझने का जरूरत नहीं है. रिमेंबर, ओके, इट इज नथिंग बट n into dn minus 1. डिरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट n into dn minus 1. ओके, एंड अगर वो इवन हो तो आप एक +1 कर दो, एंड ऑड हुआ तो -1 कर दो. ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट. ओके, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ओके, लेटर्स वाला. उसके लिए हम ये रेफर करते हैं डिरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला. सो पुट n equals to 3, you will get d3 equals to 3 factorial into 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial. Okay, you can take the LCM directly, या फिर आप चाहो तो इन दोनों टर्म्स को सीधे पहले कैंसिल कर दो. Okay, so you'll directly get 3 into 1 upon 2 factorial, ये 3 हो जाएगा, minus 1 upon 3 factorial 1 ही हो जाएगा. So 3 minus 1 सीधा आंसर 2 आ जाएगा. Okay, or you can simplify also by taking the LCM, totally your choice. Okay, let's go on to another question, guys. An Amazon delivery executive was to send 9 parcels, 5 of whom were from city A and the remaining 4 were from city B. However, he made a mistake in addressing the parcels in such a way that no customer received the correct parcel, although all the parcels for city A were sent to city A and all the parcels for city B were sent to city B. Okay, find the total number of ways in which he could have addressed those 9 parcels. Okay, अब guys हो यहाँ पे ये रहा है, 9 पार्सल में से 2 लॉट है हमारे पास. ओके, एक सिटी ए वाला लॉट है जिसमें एग्जैक्टली आई गेस 5 पार्सल होंगे, एंड सिटी बी के लिए एग्जैक्टली 4 पार्सल होंगे. ओके, अब द डिलीवरी इज डन इन सच अ वे दैट फॉर अ पर्टिकुलर सिटी ए, ओके, द सिटी ए के जितने भी पार्सल्स है वो सिटी में ही आ रहे हैं, राइट? एंड सिटी बी के जितने पार्सल है सिटी बी में ही आ रहे हैं, राइट? ओनली डिफरेंस इज जो ये 5 पार्सल हमने सिटी ए के लिए आए हैं, दे आर ऑल डिरेंज्ड. ओके, एंड सिटी बी के जितने 4 पार्सल आए, दे आर ऑल डिरेंज्ड, राइट? So it is as simple as city A and B, okay, where we have derangements of 5 objects and 4 objects for city A and B respectively.
ओके सिटी बी के लिए पहले निकालते हैं हम लोग डिरेंजमेंट्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स ओके 4 into d3 plus 1 क्योंकि d3 हम पहले निकाल चुके हैं 4 into 2 plus 1 basically give you 9 okay again d5 basically guys क्या हो जाएगा 5 into d4 minus 1 so this will be 45 minus 1 44 okay अब guys आपको सिटी A में भी डिरेंजमेंट चाहिए और सिटी B में भी डिरेंजमेंट चाहिए राइट सो नंबर ऑफ ways of delivering all the parcels is 44 times 9 giving you 396 that's the A option okay as simple as that. There are 7 different colored shirts and corresponding 7 pants of some colors. All the shirts are randomly paired, one with each pant. In how many ways can exactly 2 shirts be paired with the same colored pants? Okay. So we have total 7 colored shirts. मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको. Okay. And इनमें से exactly 2 should be paired with the same colored pants बोला है, right? And the remaining should be deranged, right? So first of all, let's understand. पहले हमको 7 में से 2 शर्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिनको आप सही पेयर कर रहे हो, right? So of these 7 shirts, you can select 2 in how many ways? 7C2, that's 21 ways, right? Now, once you select these 2 pairs, okay, let's say I'm selecting black and orange randomly, okay? जो बचे हुए 5 है, बचे हुए 5 have to be completely deranged, right? You can see it blinking on the screen. All their pants have been deranged. So it is like derangements of 5 objects, right? Derangements of 5 objects will be D5, which is 44. And you multiply this 21 with 44 because you want both of them. ये दो सही भी चाहिए और ये deranged भी चाहिए. So multiply these two, you simply get 924. That's the answer.